आउट कर लेता हूँ। भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके चाहिए जानदार शानदार पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका फेवरेट मॉडरेटर होस्ट। मेरे साथ है तीनों लोगों ने वाइट अवे किट्स पहने हुए हैं। मैंने और वत्सल ने ऐसे ही पहने थे, बट हमको देख के रोशन ने हमारी नकल करते हुए उसने ही पहन ली। मैंने चश्मा पहना है बिकॉज कल पूरी रात ऐसे 1 2 3 बजे तक मैच के सेलिब्रेशंस के बाद सुबह उठने के बाद मेरी आंखें जो लाल हो चुकी है वो मैं दिखाना नहीं चाहता, और मुझे थोड़ा स्टाइल मारना था। It feels really good to be back. It feels really good to have the tag of champions being associated with Liverpool. पहले एक क्विज करते हैं। मतलब I will ask a question, और जो लोगों के ऊपर वो रेलेवेंट है तो वो लोग हाथ खड़ा करेंगे। Who's a Liverpool fan? Who has been to a Liverpool Ahmedabad physical screening? Goodbye. भाई साहब, मतलब अच्छा देखो, मैं एक चीज बोलता हूँ, वत्सल में वो कमिटमेंट इशू है क्योंकि मैं सूरत से आके किया हूँ स्पेसिफिकली। मैं रहूंगा कहाँ रात में? अरे तू किसी को भी पूछ भाई, मैं तो हर्षल के साथ रह चुका हूँ 1 2 बार। व्यवस्था हो जाएगी, और वैसे भी तू कमाना लड़का है तो किसी के भी यार रात को क्रैश करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। साहिल के पास 4 बंगले। हाँ तो साहिल, अरे अनमोल के पास पूरा, मतलब कल हमारी स्क्रीनिंग में बात हुई तो हमारे एक LFC अहमदाबाद के हिस्ट्री में एक स्क्रीनिंग ऐसा हुआ था जो अनमोल के घर पे हुआ था। 5-6 लोग थे तो अनमोल ने कहा मेरे घर पे आ जाओ। तो मैंने कल इसको पूछा, दीप को, मैंने कहा भाई ये जो स्क्रीन है कैफे वाला ऑफ कोर्स कमर्शियल आदमी है तो उसने ठीक ठाक स्क्रीन लगाया होगा। तो मैंने बोला कैफे का जो स्क्रीन है, मैंने कहा वो अनमोल के घर से बड़ा है कि छोटा है? तो दीप ने कहा छोटा है। अभी अनमोल सर हमारे यहाँ लंदन में है ना, तो लंदन रिटर्न वत्सल बोरा जैसा कहते हैं ना, शांत सुशील आदमी बोले कि मेरे को एक रात रुकना है तो वो डेफिनेटली ऑब्लाइज करेगा। और मतलब और रोशन सूरत से आया था कल हमारे ग्रुप से, भौमिक बेलानी भाई, वो कुछ 250-300 किलोमीटर गया, वहां से वापस 250-300 किलोमीटर आया। वो मैच में है ना, मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा टाइम के अंदर है ना, वो लिटरली ऐसे करके ऐसे सो रहा है वो, है ना। और मतलब वो बंदा आखिर तक रहा था, ठीक है। आई डोंट ब्लेम हिम, एक्स्ट्रा टाइम कुछ ऐसा ही था, मुझे भी नींद सच में। और विशेष को कुछ काम था तो वो बाहर गया हुआ था, तो एयरपोर्ट पे वो 9 बजे लैंड हुआ है ना। चेक इन लगेज उसने जानबूझ के नहीं रखा था कि डायरेक्ट वो निकल सके, और वो सीधा वेन्यू पे 10:15 बजे आ गया, है ना। और वत्सल मतलब बरोड़ा, मतलब शर्म आती है ना। तो मतलब अरे यार ये और दूसरी बात ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि चलो नॉर्वेज का स्क्रीनिंग चलो करते हैं, तो मैं नहीं बोलूंगा कि चलो वत्सल आ जाओ। यार मैंने बोला कि भाई 30-35 लोग इकट्ठे हो रहे हैं यार, हमने काराबाओ कप का विन के बारे में डिस्कस करने के लिए बैठा, स्टार्टिंग की 5 मिनट तो इस पे उड़ा दी, अभी व्यूज कहाँ से मिलेंगे? यही तो कंटेंट है भाई, यही तो कंटेंट है हमारा। एनीवे हम शुरू करते हैं। हमारे मैच को जो 0-0 था, तो अगर किसी को बताया जाए कि ये मैच का रिजल्ट है 0-0, तो वो क्या सोचेगा जनरली? मतलब रोशन, तुमको वो क्या सोचेगा? क्या लगता है? मतलब तुमको कोई बताएगा फ्लॉप, तुमने मैच नहीं देखा है तो क्या सोचोगे तुम? वही अगर मैंने मैच नहीं देखा होता और मेरे को पता चलता कि 0-0 के बाद पेनल्टीज के पर I would have assumed that someone had parked the bus, कोई मरीनियो स्टाइल फुटबॉल खेल रहा है कप फाइनल में, but it was completely the other way around. Both teams were on the front foot from the very first minute. Chances galore, offsides galore. I think it was one of the best nil-nils I have seen in my life. I mean, अगर किसी को पता नहीं है ना कि ऑफसाइड होता क्या है ना, या ऑफसाइड का क्या कॉन्सेप्ट है, तो कल का मैच बड़ा ही परफेक्ट एग्जांपल था। कल 2 गोल हुए ऑफसाइड वाले, मतलब जो 2 बार बॉल अंदर चला गया है और ऑफसाइड थे। उसके अलावा आई थिंक देयर वर प्लेंटी ऑफ केसेस जहां पे ऑफसाइड है और शॉट नहीं लगा था। मतलब ऑफसाइड कितने टाइप के होते हैं वो कल हर तरीके से हमको देखने को मिला था। लाइक सम आई रिमेम्बर जो हाँ बोल रोशन। मतलब मेनली ऑफसाइड का रूल क्या है कि द अटैकर कांट बी बियॉन्ड द डिफेंडर व्हेन ही रिसीव्स द बॉल। तो आई थिंक उन्होंने एक और चीज ये ऐड किया है कि मतलब जस्ट आई थिंक इट इज अ मॉडर्न गेम इंटरप्रिटेशन इसमें कि मतलब
जो नॉन प्लेइंग प्लेयर्स हैं, लाइक हु आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द बिल्डअप, वो इम्पीड नहीं कर सकते हैं टू अ गोलकीपर और अ डिफेंडर टू लेजिटिमेटली गो फॉर द बॉल. जैसे आई थिंक there were two reasons why Van Dijk was offside. I think he was offside because उसका left foot बाहर था. That is an offside. Nobody is saying. I think people thought he was given it for impeding. I don't think it was impeding. उसका हाथ था, but वो भाग रहा था तो उसने जाने दिया. That could have उसका gone हाथ 50-50. भी नहीं था. मैंने वो रिप्ले 2-3 बार देखा है, तो उसका हाथ नहीं था. वो चेल्सी वाले ने उसको एक तरीके से ऐसे करके ऐसा हाथ रखा था. वो right. So from what pictures show, it is that like Van Dijk जैसे खड़ा था, like he was in a checking position कि वो अगर रन बनाएगा, he has to go through Van Dijk. It should take like probably half a second more, which is more than enough for player to create some space. And so मैं वही बोल रहा हूँ कि वो बहुत 50-50 वाला rule है. I mean that interpretation could go either way, but he was clearly offside because his foot was off. Exactly. I think the closest was definitely Lukaku. Yeah. Lukaku इतना सा घुटना बाहर था, मतलब that is very. So the thing is, I wasn't outraged by Van Dijk's decision like most of the people on Twitter were. Because deep down I knew, okay, he is offside, so no complaints over there. And also I thought it was onside somehow. So उसका एक चीज मैं बोलता हूँ कि तू जिस एंगल से, जो कैमरा एंगल हमने देखा है, he is clearly behind Reeves James. And तो अगर तू if you are looking at offside का ऐसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं, जैसे कि ये प्लेयर का पैर उस प्लेयर के पैर के इस तरफ है कि नहीं, वो तो क्लियर है. But Van Dijk was not receiving the ball, was he? Ball but he was indirectly so technically in the movement. अब अभी एक चीज ये है कि फाइनल बॉल किसको मिला, वो वैन डाइक को भी मिल सकता था. लाइक इफ द क्रॉस वाज अ लिटिल लोअर, वैन डाइक कुड हैव अरे वो तो मेरे बुआ जी को मूछे होते तो फूफा जी होते वाली बात नहीं है यार. मेरे को ऐसे लग रहा है कि वो बॉल इट वाज नॉट मेंट फॉर वैन डाइक एज वेल. ना ही वैन डाइक ने, तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर एक्टिवली रोका भी नहीं था. ऐसा भी नहीं था कि एक्टिवली उसने रोका है, एंड दैट इज हाउ ही बिकेम इन्वॉल्वड इन द प्ले. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि जो वैन डाइक वाला केस है, जो मैं 50-50 बोल रहा था, देख जनरली वार वाले तो वैसे भी गधे हैं. तो इन दिस केस द 50-50 वेंट इन फेवर ऑफ चेल्सी, वेयर दे इंटरप्रेटेड इट दैट वैन डाइक. वो बहुत डिफिकल्ट है यार, लाइक ऐसे. the thing is it's the other way around, आशुतोष. ये डबल साइडेड स्वॉर्ड है. अगर आज अपना कोई डिफेंडर मान ले मेसन माउंट या थियागो सिल्वा को ऐसा करता ना, तो वी वुड बी लाइक, नहीं, he is offside, he is entering the field. But just because it's our goal which was ruled out, we are talking. Partly you are right, but what I'm trying to say is कि इतने important interpretation की बात कर रहे हैं. हाँ, ये इंटरप्रिटेशन में इतना एम्बिग्यूटी कैसे हो सकता है? दैट इज ऑल आई एम जस्ट वंडरिंग. बट अगेन लाइक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट में, लाइक मैं अमेरिकन फुटबॉल भी देखता हूँ, उसमें मतलब इफ आई हैव टू गो बाय द रूल्स, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है ऑन फील्ड जो मुझे लगता है कि इस पे पेनल्टी मिलनी चाहिए टीम को, जिसने भी लाइक जो भी व्हाटएवर इट इज विद रिस्पेक्ट टू अमेरिकन फुटबॉल. तो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट में ना इंटरप्रिटेशन है ही, दैट यू कांट टेक इट अवे फ्रॉम इट. ट्रू. द थिंग इज कि फॉर यू, जैसे अगर वार और मैं हूं, मैं रेफरी हूं, मैंने क्लियरली देखा, मुझे कॉन्टैक्ट लगा, मैंने पेनल्टी दे दिया. बट यू सिटिंग इन द वार रूम कुड से कि यार ये तो लगा नहीं, ये तो ऑलरेडी ही वाज गोइंग डाउन, तो मतलब कॉन्टैक्ट हो ना हो, ही वाज ऑलरेडी फॉलिंग ओवर, तो पेनल्टी नहीं दे. तो these are things that could go either way. I'm not saying exactly. 70%. Lukaku वाला decision के लिए what's your opinion? मतलब very close, I would say. Very similar to Firmino का armpit वाला offside, right? Like because they said that shoulder is a playing part, and therefore you can score a goal with your shoulder. So uska shoulder was like probably half a centimeter or something. Not see, the thing is, Aashutosh, even if you are 1 meter offside, 1 nanometer offside is offside. There is no gray or white. I have no objection to it actually. No, he was just asking like ki Lukaku wala offside. And what I'm saying is that maybe because before the rule and before the VAR, from the naked eye, it it felt onside. Yeah, right, it looked onside from the naked eye. I mean, because the technology
remember yesterday when they showed the like side angle of, I think it was Van Dijk tracking Lukaku, both of them were together, and अगर वो lines नहीं दिखाई होती ना, तो मैं तो convinced था कि ये onside है. It was that close. Until the thing VAR is, में offside लिखा आया था ना, तब तक मेरे को तो हाँ. onside ही लगा था. मतलब मेरे until को and भी. unless it showed offside. मेरे को भी वैसे ही लगा था. एंड हम सभी को And- मतलब कहते हैं ना, सोमवार का दिन था, सभी आई मीन आज मंदिर नहीं गए तो कल मंदिर चले जाना. इमेजिन, जस्ट इमेजिन, एक बार आंखें बंद करके इमेजिन करो कि वैन डाइक डिफेंड कर रहा है, लुकाकू ने बॉल रोका, फिर उसने स्विच किया और उसने गोल मार दिया, एंड वो मैच खत्म हो जाए. I guess वो मैच खत्म होता. इमेजिन करो कि वो जो वैन डाइक के लिए मतलब क्या है कि लोग कहते हैं ना, उसको क्या करते हैं, वो ऐसा वैन डाइक से बॉल छीनने के भी मतलब अचीवमेंट निकोलस पेपे के गिनाए जाते हैं. उस दुनिया में अगर लुकाकू ने वैन डाइक को कहते हैं ना, क्या कहते हैं, वैन डाइक के आगे से अगर गोल निकाला है, भाई साहब, इट वुड हैव बीन सो अनबेरेबल. see the thing is, the thing is, I mean that was very good technique from Lukaku, है ना. बस हमको भगवान का लाख लाख शुक्र मानना चाहिए कि that turned out to be offside. बाकी भाई साहब चेल्सी वाले जीने नहीं देते. like I am sure if that goal would have stood, we wouldn't have won, because पूरे Absolutely. I guess second like 120 minutes में 80 minutes के बाद I think we didn't create any good chances. There was one Van Dijk header which was saved by Mendy, but that was a set piece. वो तो आने वाले But हैं. even other than that, I think Liverpool also had some very clear cut chances. Chelsea also Yes. had some very clear cut chances. I feel थोड़ा सा न्यूट्रल होके बताए तो चेल्सी के चांसेस बेहतर थे. It would not be wrong to say कि चेल्सी के चांसेस हमसे बेहतर थे. Better, and they I had think- more chances than us. Let me put in things that into sense. perspective. Chelsea's हाँ. chances were not taken because of their own players. Our chances were not taken because of Chelsea's goalkeeping brilliance. हाँ, वो भी है. Well, Mount ने one on one miss किया. वो वाला मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आई एग्री विद पंडित्स. मैं फ्रेंड्स के साथ देख रहा था तो मैं भी यही बोल रहा था कि पेरिफेरल विजन से उसको ऐसा लगा कि उसके पीछे लोग भाग रहे, सो ही हैड टू हरी हिज चांस. ही हैड मोर टाइम देन ही थॉट, एंड तो बॉल को एक टच लेके अपने बॉडी के आगे रख के वो स्लॉट करता तो इजी था. by the time he did, वो ball like you could see it is under his feet, तो वो feet को like it is very difficult to hit it when it is under your body, and yeah, I mean that was a saving grace. But yeah, it's just a judgment error by Mount that he thought he didn't have enough time. He had players behind. But he played well, I think. I mean, people are oh yeah, like him left, right, and center. But I think their front three was more active than ours. हमारे में I guess he's a very young player, isn't he? कितने उम्र का है वो? 23. He's not that young. कितना? 23. If Rahul Gandhi and Jesse Lingard are young, I mean 23. 22, 23. But the thing is, एक statement. 23 is Lingard young. That's what I was gonna say. अगर राहुल गांधी और लिंगार्ड यंग हैं तो माउंट तो बच्चा है. See, the thing is, their front three was much more active than ours. I think ours was a little shaky. I guess Luis Diaz was trying the most out of all three. Yes, Mane had a couple of good chances. Salah tried to chip one, didn't work out. So they had moments. But in the end, Kai Havertz, Mason Mount, Pulisic, all were looking threatening. And one player who is not getting the mention is Marcos Alonso. Even he was quite good on the I mean, shout out to Marcos Alonso कि इतना खूबसूरत होने के बावजूद मतलब इतना मेहनत करके इतनी ठंड में फुटबॉल खेलता है. बाकी मैं उसके जगह होता तो बॉलीवुड में हीरो बन गया होता. So I think जो मैं बात कर रहा था लास्ट वाले पॉडकास्ट में कि लाइक लीड्स वाला मिड वीक गेम खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, ऐसे वाले सिचुएशन में आई फेल्ट वी वर टायर्ड. हम लोग का ऐसे 3 दिन का ही रेस्ट था. सो वाज इट गुड choice for us to have played the best 11 against Leeds, or probably the most of the best 11? So I just feel we were tired going into this final for sure, and it showed. Like Thiago, Kovacic और कांटे ऐसे क्रिएटिव मिडफील्डर्स नहीं है, बॉल कैरिंग है. तो अगर उनको ब्रेक करने के लिए फेबिन्यो है हमारे पास, वो बैकलाइन ब्रेक करने के लिए वी नीडेड थियागो. वी जस्ट मिस्ड हिम. We needed someone to distribute the ball better.
हम लोग बहुत How do you ऐसे how do you rate Keita's performance? So while we are on Thiago, how do you rate Keita's Yeah. so he's not a creative midfielder, I think so. His job was to make sure that the midfield does not like penetrate behind us. He did a decent job of keeping Kovacic and Kante in check. He was always on them. ऐसा नहीं था कि कांटे आगे है तो कीटा पीछे पीछे. He is always side by side trying to go Yeah. for the ball. There was not a lot of opportunity for him to dribble एक past time and do something, but it was a decent perforance. एक टाइम था Yeah, जब I don't- कीटा से ये सारी चीजें उम्मीद नहीं रखते थे कि कीटा मतलब ये पर्टिकुलर रोल में एक्सेल करेगा. But See, he did the thing well. is, Such a short the notice, thing he is- did very good. yeah, I don't blame him for giving a 6 out of 10 tomorrow, because virtually he was Yeah. not going. He in his mind he was not going to start, and like 10 minutes or 20 minutes before, if you are going to tell him that, oh God, you are going in the starting 11, obviously your mind takes time I to don't get adjusted to such things. I don't necessarily agree with it. मतलब चारू शर्मा को मतलब घर से खाना खाते हुए उठा के भेजा था and he delivered a 10 on 10 performance. कीटा कोई बच्चा नहीं है. कीटा Right. 50 मिलियन का प्लेयर है. नहीं, but I think So, केटा I का mean- सीन ये है. I think उसने जब when he was playing for Leipzig, he Yeah. was playing more advanced. He was the ball carrier and he was supposed to make things happen with his runs and dribbling and stuff, which made defenders come towards him, Yeah. and then there were people free so he could pass to them. Liverpool mein, he's not that main man. There are other people who do it, so it is not his responsibility. So makes sense. Yes. you have kind of taken away the natural game from him. केटा जब आया था हमें ऐसे midfielder की जरूरत थी, but unfortunately he was injured all of those times. And then right now, when we have people who can dribble and take on players, केटा is not. It's not his natural game. हमने वो निकाल लिया उसके हाथ से. We have to fit him somewhere in the midfield. So I think it is more like a Wijnaldum midfield fit. Wijnaldum plays so advanced for Netherlands, but plays like defensive back. Yeah. I think Keita is transitioning into that, and that's what we are kind of seeing it from him. And he is probably like a pivot, a double pivot 6-6 wala hai. Like if Henderson is injured, then Keita and Fabinho play like that, and then advanced with Thiago or Harvey Elliott and all. Can we spend some more minutes talking about Callagher's performance as well? Because I think he was one of the most controversial pick out of all. Absolutely. Okay, he wasn't controversial just because हम लोग यहाँ तक पहुंचे तो उसके वजह से ही पहुंचे. So he deserves this chance. I think I'll raise my hand and explain, है ना. And मैं मतलब मेरे को नहीं पता था कि क्या हो रहा था. I was very swamped in work. तो मैंने आई थिंक सैटरडे के दिन था या फ्राइडे का दिन था, बट मैंने तभी देखा कि क्लॉप ने बताया है कि हम कैलेहर को खिलाने वाले. एंड आई वाज इंसेंस्ड, आई वाज फ्यूरियस. तो द ओनली रीजन इज कि क्लॉप ने ही शायद बोला है कि वी रीच्ड द फाइनल्स बिकॉज ऑफ ओरिगेन मिनामिनो. डिड वी प्ले देम? वी डिड नॉट. तो अगर प्रिंसिपल की तुम बात करते हो तो क्या सभी को खिला लो. बट चीज क्या है, मेरे को एक जस्ट लेट मी फिनिश. मेरे को ऐसे लगता है कि इट वाज sheer symbolism. I did not doubt Kelleher before the game. I did not doubt him during the game. People who know me know कि just to be proven right, I would not be like आज तो मतलब ये थोड़ा आगे तो मजा आ जाए, ऐसा मैं कभी भी नहीं सोच सकता. बट इट्स जस्ट दैट कि यार अभी फाइनल में तुम आ गए हो, तुम्हारे पास उससे 1% भी बेहतर कीपर है. वर्ल्ड्स बेस्ट गोलकीपर एलिसन भूल जाओ, 1% भी बेहतर कीपर है, तो व्हाई वुड यू नॉट प्ले हिम? आई मीन इट्स अच्छा, मैं एक चीज बोलता हूं. I get your point, and then I'll tell you like what is in Klopp's mind. ठीक है, मतलब how he's approached it this way कि उसने अपने दिमाग में ये रख लिया है कि he knows that कि Kelleher probably first टीम में ब्रेक नहीं करेगा because एलिसन को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता unless he's injured, right? Absolutely. Actually, let me just interrupt. इसमें सीन ऐसा है ना कि यार एलिसन हर साल 5-6 गेम मिस करता है इंजरीज के चक्कर में, है ना. हाँ, नहीं, I'm just saying like वो चक्कर में तो एक चीज, मैं क्लॉप की जगह होता तो मैं बोल देता कि बाबा तू चिंता क्यों कर रहा है ना. पिछले साल याद करके वो एटलेटिको के सामने इंजर हो गया था, हमने एड्रिंग को खिलाया था, इस बार तेरा बारी आएगा, ऐसा कुछ होता है तो नहीं है ना. अच्छा ठीक है, उसमें क्लियरली क्लॉप ने अपने इंटरव्यू में ही बोला था, मैं कल रात को सुन रहा था, where he said कि it is symbolism. There is human touch.
Yes. If Kelleher made a goof up and we had lost, वो क्लॉप अपने सर पे ले लेता, but like that is a risk you have, that is a risk you take in making. Allow me to yeah. The thing is, 3 reasons. One, you said why didn't we start Origi, Minamino, people like that. See, maybe Klopp के mind में यही रहा होगा कि attacking wise we need something extra. Stay with me. Defensively क्या है? He's goalkeeper. His job is just to save things. He's not like the pivot where if the forwards don't play and we like if the forwards don't perform, we are out of the game basically. Even if goalkeeping mistakes happen, we can still back ourselves to score goals. Rectify those errors. Second thing, he's just 23. He has more chance of developing in the future. And ऐसी opportunities बार-बार नहीं आने वाली. He's not going to start in a Champions League final anytime soon, even if we reach. ठीक है? I think दो तीन चीजें हैं उसमें. I have absolutely no doubt about the ability of Kelleher. I absolutely have no intention of hindering his growth. बस मेरा कहना था कि भाई अगर मैं even तेरा point समझ गया. तेरा point तो समझ गया. मैं जो कह रहा हूँ वो समझ रहा हूँ. वत्सल जो कह रहा है वो भी समझा. मैं जस्ट कह रहा हूँ कि इट्स अ डिस्कशन के भाई तुम्हारे पास अवेलेबल है जो भी बेस्ट रिसोर्सेज है तुम उसको यूज करो. दैट्स ऑल आई एम सेइंग. नहीं exactly. I agree with that point. If we have Robertson, why start Milner at left back? यही बात है ना. अच्छा ठीक है, मैं एक चीज बोलता हूँ. In this case it is definitely not just Klopp's decision also, right? Like टीम में जिन्होंने भी खेला है, when Klopp puts this idea कि like I want to start Kelleher in the final, हमारा गोलकीपिंग कोच है, एलिसन खुद है, who would back Klopp से कि हाँ भाई Kelleher को खिलाना क्योंकि उसके वजह से ही हम आज फाइनल में हैं, so let him have this limelight. We win, we lose, it's a game, but I'm pretty sure like Alisson would back this because he knows how important this could be if he wins it. If he loses, ठीक है, होता ही है, ठीक है, हार जाते हैं, like Kelleher will be like हाँ ठीक है, next season I'll try. But if he wins it just makes it for him. And I think हम लोग वो element like football as a clockwork machine चलना चाहिए. और क्या है कि देखो एक मैं ना I'm a very hypocritical person है ना. तो मैंने भले ही कितना रोना धोना कर लिया, but now that our team has done it, मैं बेशर्म होके चेल्सी को बोलूंगा कि देखो हमारे क्लब में कितनी मानवता भरी है, देखो हमने कैसे किया. तो I think एक चीज ये है कि it is not even preaching, it is more than preaching and showing that is man management in the team. I am saying that, so what I am trying to say is कि as football fans who all are hypocrites, मैं तो भले ही मैं खुद पर्सनली अग्री नहीं करता वो चीज से, फिर भी मैं तो कहने वाला हूँ है ना कि हमारे क्लब ने देखो कैसे मानवता का राह दिखाया है पूरे संसार को. So anyway, एक चीज है, I'm not totally convinced with my point of being like just a goalkeeper and that's why he's starting and not the forwards. But the thing is, Kelleher has proved he's capable of making the big saves as well, because penalty shootout पे जाने वाली थी game. वो पॉइंट भी क्लॉप के दिमाग में रहा होगा कि अगर पेनल्टीज पे गेम गई, ही इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द बिग सेव्स. कैपा जैसा सिचुएशन का हमको टेंशन नहीं होता कि शिट गेम आ गई है, वी माइट नीड टू चेंज द गोलकीपर्स. ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट एलिसन बेकर इज आल्सो वेरी बैड एट पेनल्टीज, बट if you're going to give an opportunity to a young goalkeeper, then putting him in a top final makes sense because he's got good distribution, he's got good penalty saving techniques, he's a good package to give it a risk. That's what I am going to think. I think what Ashu is saying, that giving a risk is not a cup final, is what he's trying to say. I understand, but I think the reason I mean moving on from Kelleher to my next point, और वो reason I'm going to connect these 2 points. कई लोगों ने कहा है कि अरे it's a league cup final, how does it matter, है ना. नहीं, that is wrong. लीग कप में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो क्या, that is not the correlation. I have seen n number of Liverpool fans saying, come on bro, you are acting like as if it's a UCL final. So for me a final is a final, right? Exactly, same. So for me I am not going to say कि अरे लीग कप है तो चलता है ये, तो like
I will do everything that I will be doing in a UCL final, in a League Cup final. So that is me. That's true. But anyway, and the next point is, as a Liverpool fans, हम लोग ही मतलब ये Mickey Mouse Cup और etc. कहते रहता है. How important is League Cup? Roshan and then Vatsal. See, anyways, हम लोग के पास बहुत सारे trophies आने ही चाहिए. Like we just want to win trophies. This, that, like, वही है ना कि we need to compete on all of these 4 trophies as hard as possible. There is no way we can take any one of them lightly, because that is where Brendan Rodgers could not land his players as compared to Klopp can. Even if I win FA Cup and Carabao Cup, I still am winning trophies. Players want to be in trophy winning teams. True. And this has to be consistent. We can't go like 4 trophies one season, then 3 seasons no trophies, and 4 trophies next season. We have to consistently if Liverpool has to become a successful team, they have to consistently win trophies. And if we can't win a UCL, or if we can't win a Premier League, we have to win a FA Cup. We have to win a Carabao Cup. I think the thing is, I mean, Vatsal, you were pending. See, the thing is, this final, I felt like it's more important to Liverpool than any previous domestic cups, because our record in domestic cups has been very poor under Jurgen Klopp. Like, we barely make a semi-final. We have just played one final prior to yesterday, which was against Man City in his first season. So I felt it was high time Klopp gave a side eye to these competitions, which we finally did because of our good strength and depth. And I think एक और reason, Vatsal, sorry, interrupt कर रहा हूँ. I think the only reason Klopp could do it this year was because we had a great Jan-Feb without injuries. See, generally because of injuries in players को क्या होता है कि like you have to play these youngsters and you're asking them for so much to deliver on a cup game, which is a straight up elimination game. They haven't had any minutes of professional football, and then you're asking it to win for it. So we did not set up ourselves or our team or like Liverpool in totality to win these things. I think this year shows that if you have good bench strength, if everybody is on a good mindset, if you don't have injuries, you get trophies. It's simple as that. See, the thing is, earlier during his tenure, जब Klopp आया 2015-16 में, I could understand why he was not going for domestic cups, because as Roshan said, January, February were very tough for us, and तभी FA Cup और Carabao Cup का later stages Carabao Cup का और FA Cup तब शुरू होता है. So we couldn't have a good enough team to progress. And even if we progress, when we face some big teams, we crash out. But now the thing is, we used our bench strength really nicely during the starting, during the initial stages of the tournament against Preston, against I think Leicester. We played well. Oh, and the Leicester game, Minamino. I think he was a baller during that. Minamino have to be credited. Even Oxlade-Chamberlain also, he did really well in the. Now the thing is, we are going to face Norwich in a couple of days' time in the FA Cup 5th round. We have a chance of making it to the 6th round for the first time under Jurgen Klopp. Why is that? Because of our bench strength. Everything comes down to the bench strength in the end. Because we all know Klopp को भूल जाओ. We all know that all these big teams, Man City, Chelsea, Liverpool, are not going to play their first 11 in these cup matches. Because it doesn't make sense from the financial point of view. It doesn't make sense from the season's point of view. But since these trophies matter, we have to back our second team or third team to do well in the initial stages. So, and then the first team takes over in the latter stages. वो कब होता है जब bench अच्छी हो. तो in the end, it's down to our Klopp's rebuilding जो भी किया उसने after Rodgers and stuff. So credit to him as well. Yes. And I think for someone like me, जिसने Hodgson की era देखी है, and I think League Cup is very very close to my heart, है ना. जिस तरह से कप जीते थे, है ना. मैं मतलब अभी पिछले 1-2 महीने तक मतलब लीग कप के बजाय कार्लिंग कप ही मेरे मुंह से निकलता था. So
उसका 2 रीजन है कि एक तो हम जीते थे, दूसरा कि उसके बाद मतलब आई थिंक क्लॉप की जो फाइनल थी मैन सिटी वाली, उसके बाद हम पहुंचे नहीं थे आगे, तो मुंह पे वो काली भी चढ़ा रह गया था. क्या So I it फाइनल. think we was lost in the semi-final against Southampton. That was the yeah. closest we later came again. I think that was Yeah. one of the So the games. thing is that I mean we have the highest number of league cups, you know. So it's something that Nice. जहाँ पे हम बहुत ही अच्छा है, तो why not actually go for it when we have the opportunity? So it is. I mean, for me, it's important, and even if we do not win it next year and Man City wins it again, I mean, See, I'm not going to. It's not an important tournament. just ठीक है. to get things into perspective, लीग कप Yeah. एक एफए कप कैसी चीज है कि जो स्टार्टिंग में होती है ना, तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि पहले राउंड में हम नॉकआउट हो जाएंगे ना, तो कोई क्लॉप आउट ट्रेंड नहीं करने लगेगा, True. क्योंकि इट इज ऑन द साइड लाइंस. मतलब एफए कप और लीग कप इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल कप बनती है जब क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में हो, तब निकलना इट्स हार्ड टू टेक बिकॉज यू आर सो क्लोज टू विनिंग समथिंग. But like I'm sure United but I fans- think है ना, prioritizing of the 5-7 साल trophy. के बाद 5-7 साल के बाद तुम जब समरी देखते हो ना यार कि तुम्हारे ट्रॉफीज कितने थे क्या थे, है ना, तो ये 2-4-5 ट्रॉफी सारी ऐड होती है, Right. है ना. वही है. तो Mourinho का legacy वही है ना. Priority is to win trophies. We were trophyless since 2 years and 3-4 months after the Club World Cup. So Club World Cup के बाद शायद PL जीते ना, और Club World Cup पहले था. नहीं, Club World Cup के बाद PL जीता. But I think PL के बाद हम एक भी टूर्नामेंट नहीं जीते. 2020 के बाद 2021 was a trophyless season. Well, it was a very disastrous season. उसके बाद हम ट्रॉफी नहीं जीते, तो 1.5-2 साल हो गए हैं जहां से हम ट्रॉफी नहीं जीते हैं. तो थिंग इज कि यार लीग कप यू नो वो फिर से एक विनिंग मेंटालिटी टीम में वापस आ जाती है. एवरीबॉडी इज यू नो हैप्पियर अगेन. सिंपल एक ही चीज है यार. You have to make a squad. I mean, if you are going to become an elite team, you have to make a squad which prioritizes number of trophies than which trophy. Simple as that. Trophy है, तू चैंपियंस लीग में भी उतने ही एलिमिनेशन गेम्स खेलने हैं जितने तेरे को यहाँ पे खेलने हैं. इट डजंट मैटर. इट्स द फॉर्मेट इज द सेम अपार्ट फ्रॉम योर लीग में तो वेरिएबल्स आर मोर. सो ओके ठीक है, लीग इज नॉट एज इजी टू विन, बट वी कैन नॉट प्रायोरिटाइज अ यूसीएल ओवर अ पीएल और समथिंग. वी हैव टू विन अ ट्रॉफी. दैट्स इट. अंडरस्टैंडेबल. और फैंस है ना, कुछ पर्टिकुलर फैंस है ना, वो अंगूर खट्टे वाली बातें करता है, जैसे कि मैन सिटी के फैंस का मैंने एक सीरियस ट्वीट था, वेरी सीरियस ट्वीट, जो उसने कहा था कि चैंपियंस लीग इज लाइक लीग कप ऑफ यूरोप. राइट. आई मीन जीते नहीं है ना, इसलिए बोल रहे हैं. They have not won, so I mean that this is something. अरे वो छोड़, बट द अदर पॉइंट इज जब वो लोग जीते थे एफए कप, कम्युनिटी शील्ड, सब जितने भी जीते थे, तो सेक्सटुपल उनका. हाँ. So I mean वो ये सब दोगलापन है. I think my tweet from today morning, I'm not sure whether you guys have seen it or not, summed it up perfectly. It's like Carabao Cup is very simple. If we win, trophy. If we lose, Mickey Mouse Cup. It's that thing. Yeah. But I'm for once really proud to win this cup because since Klopp took over, we have never given a shit about such tournaments. And now that we actually have won, shows that we are going in the right direction. And I'm sure, let's assume we are winning the 5th round against Norwich. We are into the 6th round. We win that. We are in the quarterfinals. I'm sure we are going to give a good look at the FA Cup as well. Why not? Yeah, we have the team to do it. The thing is, back then we also didn't have a good goalkeeper. Now Keller is proving that he is 75% or 60% there at Alisson's level. I think other thing to realize is that this is probably after a long time we have had 2 really good keepers. See, that's a good point. Like the other thing is like Mignolet gaya to kaun? हम लोग को मतलब Danny Ward, I don't know. See, goalkeeper gives us confidence ना. Keller है तो भी वो डर नहीं लगता back of the mind के हाई लाइन टूट गई या तो क्या होगा. They are very similar. They're very similar in terms of how they play. Sweep भी करता है, punch भी करता है, distribution भी. He learned little distribution little bit, but he's definitely he has the attributes of Alisson. He'll work it out. He'll get better. See, that happened in defense as well yesterday when for some reason Matip was substituted for, Konate was substituted for Matip. I didn't feel some pressure or didn't get scared that why is Konate coming on all of a sudden. Matip had a horrible day for me, I think. Apart from that one goal, he was
shaky enough. Yeah, But yeah. still, that is the, once again, bench strength की बात कर रहा हूँ. That is the confidence which has given to us fans. Yes. Yeah, but anyhow, so I mean, मेरा टारगेट है, मैंने ये कहा था कि मैं ये सीजन में से अगर 2 ट्रॉफी जीतते हैं, it doesn't matter if it's League Cup and FA Cup, I'll be happy. हमने 50% काम कर लिया है. So are you guys getting greedy about this season? I mean, what would be your expectation? The expectation is to win any possible trophy that we can. Premier League can go down the wire, so we will not comment on it. I mean, we want Liverpool to win, but again, City is not a pushover, and so they might gain some form in the later stage. It will just show how it goes. I think we should win FA Cup for sure. Like I think it's been रोशन ने pragmatic बात कर ली है. रोशन ने pragmatic बात कर ली है. अभी तुम्हारे पास अगर कुछ pragmatism वाली बात है तो मत बोलो. See, मेरे expectations है तो ही बोलना. Do you have anything outright? नहीं, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ. Just listen. The thing is, अगर मेरी expectations, मैं life में बहुत expectation रखता नहीं हूँ, सबसे पहली बात. So the thing is, I am already believing that catching, despite just being 6 points behind Man City, the game in hand, so 3 points behind Man City, I am still pretty sure that based on the fixture, City are going to claim the Premier League title, and we are going to fall short by a couple of points. So that is what I am expecting. But the thing is, the positive side of my expectations is that I think I talked regarding this in a previous podcast with Anmol and Roshan, is that beating Liverpool in a Champions League tie over 2 legs is one of the most difficult things any team can do. Based on the Anfield factor, the squad factor, and the Klopp factor. So I think we have a very realistic chance of winning our 7th Champions League title this season, solely on the fact that beating Liverpool over 2 legs over 180 minutes of football is really difficult. Yeah. So I am giving an FA Cup is a bonus for me. So I want us to win the FA Cup because we haven't won it since 2006. So that will be a good thing to win as well. But I really feel we have a really good chance of winning, or at least progressing into the latter stages of the Champions League. Yep. So I mean, that brings us to the close of today's session. रोशन को स्कूल जाना है और वत्सल को मेरा बहुत सिर दुख रहा है यार, मेरे को सोने जाना है. Vatsal is going to go same behind girls who will not reply to his text. So this brings us to the close. I got a text by the way. मैं दिखा नहीं सकता फोन स्क्रीन ऐसे करके. Yeah. So thank you all for listening. That's it from our side. Bye. Ciao. Bye bye. Guys.